ये वीडियो वो आ रही सामने, स्टूडेंट ऑन करेंगे तो नहीं इस पे हमारी वीडियो है। हाँ जी दिखाओ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी जी फॉर द इनकन्वीनियंस, हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का इशू चल रहा था थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो है वो बार बार ये जो है डिस्टर्ब हो रहा था। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ एक स्टूडेंट मुझे बता दें। यस सर। चलें, थैंक यू और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब ये है कि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो बात हम कर रहे थे वो फिर हम किसी और दिन करेंगे जिस दिन हमारे पास टाइम होगा। ऑलराइट, तो एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें, एंड उसमें रूटीन में क्वेश्चन आते हैं। और एक ड्रग ऐसी है इसमें जो हम कोविड में भी ऑफ एंड ऑन, बड़ी कंट्रोवर्शियल ड्रग है, कोविड में यूज़ हो रही है, पाकिस्तान में कर रहे हैं ट्रायल्स उसके हैं कि रिजल्ट आते हैं नहीं आते, बट बड़ी कॉमनली यूज हुई है वो ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि कोविड की ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज हो रही हैं दे आर इम्पोर्टेंट दीज डेज। तो लेट्स टॉक अबाउट right. So anti-helminthics are the drugs used in the treatment of infestation with helminths in the intestinal tract or tissues of the body. यानी कि एंटी हेलमिंथिक्स आर ड्रग्स जो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेस्टेशन विद हेलमिंथ्स, जो हेलमिंथ्स इंटेस्टाइनल ट्रैक या टिश्यूज ऑफ द बॉडी जो है उसमें जो आ जाते हैं उनकी इन्फेस्टेशन हो जाती है। एंटी हेलमिंथिक्स जो है दैट किल वर्म्स, they are called vermicides, and those that help to expel the worms are called vermifuges. तो हेलमिंथ्स की जो अगर हम बात करें तो इसको अगर सिंपली क्लासिफाई करें सिर्फ हेलमिंथ्स को, तो वी से राउंड वर्म्स जो हैं दे आर नेमाटोड्स, flatworms जो हैं they are further divided into flukes and tapeworms. So flukes are also known as trematodes and tapeworms are the cystodes. तो अब हम आज सारी वर्म की गेम है, जो वर्म का जो है हम एंटी हेलमिंथिक्स जो है वर्म की ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो कॉमन हेलमिंथिक्स जो हैं अगर हम बात करें इसकी, माइक्रो में ये टॉपिक कवर हुआ है आप लोगों का पैरासाइटोलॉजी में? जी, कैन एनीवन कमेंट ऑन दिस वन? नो सर। नहीं हुआ। चलें अभी हम इसको ये नेमाटोड्स और सिस्टोड्स को आप एक दफा यहाँ पे रीड कर लें। यू विल रीड द डिटेल अबाउट दीज पैरासाइट्स और जो है ये नेमाटोड्स और सिस्टोड्स को माइक्रो में आप करेंगे कवर, बट वी जस्ट ब्रीफली जो है मैंने आपको बताया कि हेलमिंथ्स आर राउंड वॉर्म्स एंड फ्लैट वॉर्म्स। तो फ्लैट वॉर्म्स में जो है आर फ्लूक्स विच आर ट्रेमाटोड्स एंड टेपवॉर्म्स आर सिस्टोड्स, और राउंड वॉर्म्स जो हैं दे आर नेमाटोड्स। नेमाटोड्स में राउंड वॉर्म्स एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, hookworm, एंकेलोस्टोमा ड्यूडेनल, थ्रेडवर्म, वर्मिकुलरिस, whipworm जो है उसमें ट्रैक्यूरिस, ट्रैक्यूरिया, फ्लैरिएसिस, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड ब्रूगिया मलाई। सो ये नेम्स जो हैं ये डिफिकल्ट हैं, लेकिन व्हेन आई होप जब आप माइक्रो कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे तो यू विल गेट फेमिलियर टू दीज। सिस्टोड्स जो हैं दे आर टेपवर्म्स, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, हाइडेटेड डिजीज, वेरी कॉमनली क्वेश्चन आस्क्ड इन योर माइक्रोबायोलॉजी जो पार्ट है आपका उसका। तो ई ग्रेनुलोसस एंड मल्टीलोक्यूलरिस लोक्यूलेरिस जो है वो कॉज करता है। ट्रेमाटोड्स में जो है शिस्टोसोमियासिस जो है, शिस्टोसोमियासिस हेमाटोबियम, तो इनकी बात करेंगे हम। तो हमने अगर इनकी ट्रीटमेंट करनी हो तो जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं विच आर एक्टिव अगेंस्ट नेमाटोड्स दे आर एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, पायरेंटल, पामोएट। ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट ट्रेमाटोड्स जो है दे आर प्राजिक्विंटल। ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट सिस्टोड्स एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्राजिक्विंटल। अच्छा, इसमें 3-4 ड्रग्स हैं, इतना घबराने की बात नहीं है कि ये इतने बड़े डिफिकल्ट नेम है और ये याद नहीं होंगे। इसमें 3-4 ड्रग्स करनी है आपने जो जिनमें से टिपिकल जो है रूटीन में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि अगर बैड लक हुई तो जो है वो कहीं और से एग्जामिनर दे दे, लेकिन यूजुअली
यूजुअली ये है कि रूटीन में जो क्वेश्चंस जो हैं दे आस्क फ्रॉम द, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको. सो आप देखें अगर ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट नेमाटोड्स जो है दे आर एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, पायरेंटल पामोइड. ठीक है. ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट नेमाटोड्स यू शुड नो प्राजिक्विंटल, मेट्रिफोनेट. एक दो नाम इनमें याद कर लें, स्पेसिफिकली प्राजिक्विंटल एंड मेट्रिफोनेट. ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट सिस्टोड्स वही रिपीट हो रही है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्राजिक्विंटल और निक्लोसामाइड जो है एक ड्रग और ऐड हो गई है. ठीक है. तो हमने ये एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, प्राजिक्विंटल, निक्लोसामाइड इन पे फोकस जरा ज्यादा रखना है. So when we talk about drugs active against nematodes, तो जो नेमाटोड्स हैं उनके अगेंस्ट जो एक्टिव ड्रग्स हैं दे आर एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, पायरेंटल पामोएट, पिप्राजीन, डाइथाइल कार्बामेजीन. तो इनमें से अगर आप एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल यू हैव टू रिमेंबर, आइवरमेक्टिन यू हैव टू रिमेंबर, पायरेंटल पामोएट, ये चार ड्रग्स हमने डिस्कस करनी है, पिप्राजीन भी, तो आपको ये खुद ही याद हो जाएंगी. सो दिस आर इंपॉर्टेंट, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन. जब भी एंटी हेलमिंथिक्स की बात आती है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, तो आप इसको आपने प्रॉपर तरीके से याद करना है इन ड्रग्स को, क्योंकि ये हर जगह पे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन आइवरमेक्टिन मैंने आपको बताया, द क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन. रूटीन में क्वेश्चंस दे डू आस्क इन द एग्जाम. जो प्रॉफ है आपका उसमें इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉमनली. और बाकी पायरेंटल पामोएट, प्राजिक्विंटल, दे आर अगेन इंपॉर्टेंट ड्रग, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं. तो जब हम नेमाटोड्स के अगेंस्ट जो एक्टिविटी ड्रग्स की बात करते हैं, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, पायरेंटल पामोएट एंड पिप्राजीन. तो मेबेंडाजोल मैंने बताया इंपॉर्टेंट ड्रग है, यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मेबेंडाजोल. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक है, लो टॉक्सिसिटी है, orally administered, poorly absorbed, absorption increases with fatty meals, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी हाई होती है और रैपिडली मेटाबोलाइज होती है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी इजी है, आपने पहले भी पढ़ा है. जो हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो इट बाइंड्स टू बीटा ट्यूबुलिन एंड इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन. जो भी जिनके अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी है नेमाटोड्स की, ये उनकी बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन. It also blocks glucose transport into the parasite, resulting in immobility and death of worms. ठीक है. So everything you have to remember regarding mebendazole. Then clinical uses की जब हम बात करते हैं, they are highly effective against intestinal nematodes, roundworm, hookworm, whipworm, pinworm and mixed worm infestations. जब हम इनकी बात करें, easy to remember है इसका clinical uses. नेमाटोड्स के अगेंस्ट एक्टिविटी, और नेमाटोड्स में राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, विप वॉर्म, पिन वॉर्म, सारे वॉर्म्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन. एडवर्स इफेक्ट इज जीआईटी इरिटेशन, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, एलोपेशिया एंड दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. दिस इज मेबेंडाजोल. सो व्हाट इज ग्रेनुलोसाइटोपेनिया? एनीवन? कैन एनीवन कमेंट ऑन व्हाट इज ग्रेनुलोसाइटोपेनिया? A decrease in the number of granulocytes, Yes, which is neutrophil. which is neutrophil. ठीक है. इसमें ज्यादा तेजी से डिक्रीज होते हैं, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोपेनिया होता है. सो थैंक यू फॉर दैट. सो मेबेंडाजोल मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट ड्रग है, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मेबेंडाजोल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट. अगेन albendazole is related to mebendazole. Mechanism of action इनका same है, similar to mebendazole. What was the mechanism of action? It binds to beta tubulin and microtubules को depolymerization नहीं होने देता. Again, it also inhibit the glucose transport into the parasite, जिसकी वजह से immobility हो जाती है worms की and death हो जाती है. ठीक है. Albendazole also a broad spectrum antihelminthic. Mechanism of action is similar to mebendazole. Both are benzimidazoles. So it can be given orally. What is erratic absorption? Can anyone comment on erratic absorption? Okay, erratic absorption is something like unusual absorption होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है. So कोई defined absorption का pathway नहीं है कि जी कहीं पे ज्यादा होगी. It can be anything, या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है. तो बड़ा unusual सा behavior होता है absorption का. तो increase due to fatty food जो है वो इसकी absorption को increase कराते हैं.
एंड रिगार्डिंग एल्बेंडाजोल यू हैव टू रिमेंबर, जब हमने मेबेंडाजोल की बात की थी हमने कहा था क्लिनिकल यूजेस में राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, whip worm, so all those worms. But एल्बेंडाजोल किस तरह से डिफरेंशिएट करती है मेबेंडाजोल से कि उसमें जो है इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्टिव मेटाबोलाइट, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग हाइड्रेटेड सिस्ट. तो हाइड्रेटेड सिस्ट में भी वो जो है मेटाबोलाइट डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो एल्बेंडाजोल इज प्रेफर्ड टू मेबेंडाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज. ये हाइड्रेटेड डिजीज को आप अभी माइक्रोबायोलॉजी में कवर करोगे अपने, तो जो है उसमें जब आपको पता लगेगा इसकी ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल का रोल है, मेबेंडाजोल का नहीं है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, एल्बेंडाजोल इज प्रेफर्ड टू मेबेंडाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज ड्यू टू वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट में भी ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है. सो क्लिनिकल यूजेस ऑफ एल्बेंडाजोल, नेमाटोड्स की एक्टिविटी अगेंस्ट है उसके नेमाटोड्स में राउंड वॉर्म, whip worm, पिन वॉर्म, सिस्टिसरकोसिस, देन अगेन अनदर जो है वो पैरासाइट है जो ये कॉज करता है, उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है, हाइड्रेटेड डिजीज के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है. एंड फिलारिएसिस, बुल्चेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है नेमाटोड जो फिलारिएसिस कॉज करता है, इट इज फिलारिएसिस. यहाँ पे इसके स्पेलिंग काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी जो है फिलारिएसिस के स्पेलिंग एस से एक मिसिंग है बीच में. Also active against larva migrants. So what I just told you, that you have to remember each and everything regarding mebendazole and albendazole. एंटी-हेलमिंथिक टॉपिक बड़ा छोटा सा है, लोग कहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉफ में. स्पेसिफिकली एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स. रूटीन में प्रॉफ में दे आस्क दीज क्वेश्चंस. एडवर्स इफेक्ट्स आर few toxic effects. Prolonged use may cause leukopenia, alopecia and raised level of liver enzymes. Right? तो हमने मेबेंडाजोल एल्बेंडाजोल को डिस्कस किया. वी आर डिस्कसिंग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. हेलमेंथ्स को हमने डिवाइड किया था राउंड वॉर्म में, विच आर नेमाटोड्स, देन फ्लूक्स विच आर ट्रेमाटोड्स, एंड देन जो है देन देयर वाज सिस्टोड्स. राइट? देन जब हमने फिर बात की, हमने एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स की बात की. एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स में हम जो ड्रग्स विच आर एक्टिव अगेंस्ट नेमाटोड्स उनकी बात कर रहे हैं. So nematodes are roundworm, pinworm, filariasis, Wucheria bancrofti जो कॉज करती है. देन देयर जो है और जो इसमें आ जाते हैं हाइड्रेटेड डिजीज जो है. तो दे हैव एक्टिव ड्रग एक्टिव अगेंस्ट nematodes are mebendazole and albendazole. सो मेबेंडाजोल की जब हमने बात की थी, मैंने आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताया. यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल. मेबेंडाजोल इज उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, इट बाइंड्स विद द बीटा ट्यूबुलिन और जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता. इट आल्सो इनहिबिट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू द पैरासाइट, जिसकी वजह से इमोबिलिटी हो जाती है पैरासाइट्स की और डेथ हो जाती है. ठीक है, मॉम्स की. देन जो मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. मेबेंडाजोल जो है उसकी भी एक्टिविटी अच्छी है अगेंस्ट नेमाटोड्स, बट एल्बेंडाजोल जो है उसको क्या वो ज्यादा एक्टिव है अगेंस्ट हाइड्रेटेड डिजीज, सिस्टिसरकोसिस को भी कवर कर रहा है. एंड देन इट आल्सो हैज एक्टिविटी अगेंस्ट लार्वा माइग्रेन्स. सो एल्बेंडाजोल इज प्रेफर्ड ड्रग ओवर मेबेंडाजोल इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज. So adverse effect, so you have to remember each and everything regarding albendazole and mebendazole. मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ टॉपिक्स. अगर आप उठा के देखें अपने you see the university questions, you will see that they usually ask question regarding albendazole, mebendazole. So please try to cover these drugs. Then ivermectin की बात मैं कर रहा था. So कोविड में इस ड्रग को आपने रूटीन में देख रहे होंगे कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं ivermectin. Some new articles they are also suggesting its role. कुछ articles जो हैं वो कह रहे हैं कि इसका रोल नहीं है, तो अभी एक कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर. But still many जो physicians हैं they are prescribing ivermectin for the treatment of COVID. So ivermectin, it was before COVID also. They used to ask this drug in your prof university question में. They usually इसके questions आ जाते थे, mechanism of action, clinical uses, adverse effect. So now ivermectin, since its role in COVID, so जो है there is a possibility that they may ask you this in your prof. So ivermectin, you have to remember each and everything regarding ivermectin. They increase GABA transmission in worms. GABA is a inhibitory neurotransmitter. तो होता क्या है, क्लोराइड चैनल्स ओपन करता है और जो है जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल्स होते हैं उनकी ओपनिंग होती है. इट लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन एंड पैरालिसिस ऑफ फॉर्म्स. हाइपरपोलराइजेशन जब होती है, ये जब अभी आप आगे सीएनएस में बेंजोडाइजेपीन्स पढ़ेंगे,
तो उस टॉपिक में भी यू विल डिस्कस कि हाइपर पोलराइजेशन किस तरह से सेडेशन और वो करवाती है हाइप्नोसिस इंड्यूस बॉडी में by opening chloride channel. It will lead to hyperpolarization and paralysis of worms. So ultimately it will cause death or phagocytosis of worms. ठीक है. So ivermectin easy to remember, इसका mechanism of action GABA agonist है, increase GABA transmission in worms, जिसकी वजह से hyperpolarization होती है, worms का paralysis हो जाता है और ultimately it leads to death. Intensifies GABA mediated neurotransmission in nematodes and causes immobilization of parasites, facilitating their removal by the reticuloendothelial system. So clinical use, ivermectin is the drug of choice for onchocerciasis, cutaneous larva migraines, strongyloidiasis, and some forms of filariasis. So you will read all about these drugs in microbiology, so I don't have to go in that much detail. All you have to do is just memorize for right now. So micro में भी आपको जब आप नाम आते होंगे, so you can read about it. So ivermectin intensifies GABA mediated. I have just told you that you have to remember each and everything regarding mebendazole, albendazole, and ivermectin. Ivermectin intensifies GABA mediated neurotransmission in nematodes and causes immobilization of parasites, facilitating their removal by the reticuloendothelial system. Clinical use. Ivermectin is the drug of choice for onchocerciasis, cutaneous larva migraines, strongyloidiasis, and some form of filariasis. टॉक्सिसिटी मैंने आपको बताया ivermectin की हर चीज इंपॉर्टेंट है. टॉक्सिसिटी की भी आपको पता होना चाहिए. रिएक्शंस टू द डाइंग वॉर्म्स, जब आप डाइंग वॉर्म्स जब बॉडी में वॉर्म डाई कर रहे होते हैं तो उनकी वजह से रिएक्शन होता है. फीवर, हेडेक, डिजीनेस, रैशेस, प्रूराइटिस, tachycardia, hypotension, and pain in joints, muscles, and lymph glands. These can be controlled with antihistamines and NSAIDs. तो हम इनको एंटीहिस्टामिन्स उन पेशेंट को दे सकते हैं, एनसेड्स फॉर पेन दे सकते हैं, एंड दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन. कैन एनीबडी कमेंट ऑन व्हाट इज प्रूराइटिस? Like फिरोज है या? pruritus is यस यस प्लीज. itching. Itching. The itching. Itchiness. Yes, Right. itching. Pruritus is the itchiness, right? So reactions to the toxicity में you have to remember these things, and you should know how to control these effects. Antihistamine दे सकते हैं patient को, हम NSAIDs दे सकते हैं to control the pain, and this is contraindicated in pregnancy. So I am telling you time and time again that please you have to remember antihelminthics में आपने albendazole, mebendazole, ivermectin. You have to remember each and every thing about these drugs. These are very important. Routine में they ask questions in your prof. So piperazine, again hyperpolarization of ascaris muscles, जो ascariasis and nematodes हैं उनमें उनकी hyperpolarization cause करता है due to GABA agonistic action of chloride channel. मैंने आपको बताया ये भी आप benzodiazepines जब हम CNS में करेंगे you will have the idea. So घबराने की बात नहीं है कि जी ये GABA agonistic action of chloride channel opening. I'm sure physiology में you have read about it. If you are forgetting, so hyperpolarization होती है because GABA जो है, जो gamma aminobutyric acid, it is an inhibitory neurotransmitter, और उसका जो action है it occurs by the action of opening of the chloride influx होता है, chloride channel open होते हैं और chloride ions के influx की वजह से hyperpolarization होती है body में, और it causes a decreased response to एस्टाइल contractions जो है उनको decreased response आता है उनके against, and then it will lead to flaccid paralysis. Adverse reactions जो हैं usually well tolerated, nausea, vomiting, dizziness, convulsion, contraindicated in renal insufficiency and epileptics, and it has a role against roundworm infestation. So this is about piperazine. Then pyrantel palmoate. So mechanism of action of, again same activation of nicotinic cholinergic receptors, worms में उनकी activation होगी. Persistent depolarization. अब ये इसका mechanism of action is same like succinylcholine. Succinylcholine जब आपने पढ़ा होगा तो you remember that जो non depolarizing neuromuscular blockers थे वो क्या करते थे, वो just like atracurium they block the nicotinic receptors, और acetylcholine उनसे bind नहीं करता था. So succinylcholine what it does and what is the mechanism of action for that, वो persistent वो bind करता है nicotinic receptors के साथ, and it causes the persistent depolarization. और persistent depolarization की वजह से जो receptors हैं they cannot उनकी persistent जब depolarization होगी तो वो दोबारा activate नहीं हो सकेंगे, and it will ultimately it will lead into contracture and spastic paralysis. So it causes the expulsion of the worms. Adverse reactions में GID distress, headache,
एंड वीकनेस ये वॉर्म के साथ कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसमें जो भी ड्रग कर रही है उनका सारा इफेक्ट जो है वो नेमाटोड्स के ऊपर आ रहा है. So it will cause adverse reaction जो बॉडी में हो सकते हैं पेशेंट की, GIT डिस्ट्रेस, हेडेक एंड वीकनेस, एंड यूजेस जो हैं हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड पिन वॉर्म. हमने बात की ड्रग जो which were active against nematodes. So these are the drugs which were nematodes का भी मैं एक दफा दोबारा बता दूं. Nematodes are roundworm, hookworm, threadworm, whipworm, filariasis. So drugs which were active against nematodes, they were albendazole, ivermectin, mebendazole, pyrantel pamoate, and you have to remember each and everything regarding albendazole, mebendazole and ivermectin. प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा. डू रीड अबाउट दीज ड्रग्स, इनको याद करें अच्छे से बिकॉज दे रूटीनली आस्क क्वेश्चन. तो उन्हीं देखें अब दो ये albendazole, mebendazole, these are the drugs also they have activity against cystodes other than trematodes. So you have to remember this, right? तो हमने बात nematodes के अगेंस्ट जो एक्टिविटी जिन ड्रग्स की थी उनको डिस्कस किया, जिसमें albendazole, mebendazole and ivermectin were the important one. So drugs against cystodes. Again, the same albendazole, mebendazole we have discussed. So we will discuss niclosamide and praziquantel. Praziquantel is again an important drug. इसका भी काफी रोल है और they do ask exam question on praziquantel. So niclosamide is the second drug of choice alternative to praziquantel against tapeworm, Tinea saginata, Tinea solium. Then mechanism of action is inhibition of oxidative phosphorylation in mitochondria and interference of inhibit कर देता है oxidative phosphorylation mitochondria में and interfere with the anaerobic generation of ATP. So adverse effect is GIT distress, headache, skin rash. So it has the activity against cystodes. और cystodes जो हैं they are Tinea saginata, Tinea solium, tapeworms जो हैं they are cystodes. So drug which are have activity against trematodes, उसमें हम praziquantel, metrifonate की अगर बात करें तो praziquantel I just told you is an important drug. They ask question on praziquantel. So it also has the activity against trematodes. Praziquantel mainly schistosomiasis जो है, this is again is a trematode, schistosomiasis. You will read about it, and other trematodes and cystodes, but they don't have activity against nematodes. Nematodes की against activity नहीं है praziquantel की. Praziquantel करता क्या है? It increases membrane permeability to calcium. कैल्शियम की मेम्ब्रेन उसको कैल्शियम के लिए उसकी permeability increase होती है. There is influx of calcium ion causing marked contraction initially in trematodes and cystodes, and then it will cause the paralysis of trematodes. Marked contraction होती है due to influx of calcium, which ultimately lead to paralysis of trematode and cystode muscle. This is followed by vacuolization and parasite death. So you have just remember कि जी influx of calcium ion होती है जिसकी वजह से marked contraction होती है in trematode and cystode, and it will ultimately will cause the parasite death. Uses: first line of drug in all tapeworms except cysticercosis. First line of drug in all schistosome infestation and flukes. Anyone can tell me cysticercosis हमने उसके अगेंस्ट कौन सी ड्रग की एक्टिविटी है? अभी हमने वो ड्रग पढ़ी थी थोड़ी देर पहले. Okay, I gave you a hint. Mebendazole or albendazole. Cysticercosis के अगेंस्ट किसकी एक्टिविटी है? Can anyone comment on this one? Albendazole. Albendazole. Thank you. Thank you. Albendazole के अगेंस्ट जो है एक्टिविटी, albendazole की एक्टिविटी mebendazole से ज्यादा है, and albendazole has more activity than mebendazole in comparison to when जब हम activity against nematodes की बात करते हैं. albendazole जो है वो hydrated disease में भी यूज होती है, cysticercosis में भी यूज होती है और filariasis में भी यूज होती है, जबकि mebendazole जो है उसका रोल worms के अगेंस्ट जो whipworm, roundworm और जो है other kinds of जो worm infestation है nematodes में, उनके अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी ज्यादा है. But albendazole is more broad spectrum activity. So first line of drug in all tapeworms except neurocysticercosis. हम praziquantel की बात कर रहे हैं. First line of drug in all schistosome infestation. Schistosome की जब भी बात आएगी तो उसका ट्रीटमेंट जो है उसमें praziquantel आप लिखेंगे. ठीक है, ये आपको माइक्रो में भी ट्रीटमेंट कहीं पे लिखना पड़ जाता है. सो यू हैव टू, दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर फार्माकोलॉजी एज वेल एज योर माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी जब हम बात करेंगे. मोस्ट कॉमन इज डिजीनेस,
हेडेक, डिजीनेस और ड्राउजीनेस कॉज करता है, मलेज, GIT इरिटेशन, स्किन रैश एंड फीवर. So this is again contraindicated in pregnancy. So this is all about your anti-helminthic drug, and we have to do another topic जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is the immunopharmacology. वो भी हम अभी कंप्लीट कर लेंगे because एंटी हेलमेंथिक भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें आपने कुछ ही चीजों पे फोकस ज्यादा करना है. कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिन पे आपने फोकस अपना ज्यादा रखना है एंटी हेलमेंथिक में? एक तो आपको सारी ड्रग्स का पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग की एक्टिविटी नेमाटोड्स के अगेंस्ट है, कौन सी ड्रग की एक्टिविटीज जो है विच आर द ड्रग्स दे हैव एक्टिविटी अगेंस्ट ट्रेमाटोड्स एंड विच आर द ड्रग्स दे हैव एक्टिविटी अगेंस्ट सिस्टोड्स. इजी टू रिमेंबर है, सिस्टोड्स और जो है नेमाटोड्स तो मिलते जुलते हैं. ट्रेमाटोड्स में प्राजिक्वेंटल आप याद रखें. देन you should know each and everything regarding bendazole, albendazole, ivermectin and praziquantel. ये 4 ड्रग्स जो हैं इनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए बिकॉज इनमें दे रूटीनली आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इन योर एग्जाम. और फिर अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टॉपिक छोड़ा होता है दे गेट कंफ्यूज. सो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ivermectin, albendazole, mebendazole, praziquantel, important and drugs. They ask question in the exam, so you should know each and everything like mechanism of action, adverse effect, uses of these drugs. So I am going to start the immunopharmacology. वो मैं अभी आपके साथ दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ. एक मिनट मैं कर लेता हूँ. ये इस पे नहीं आ रहा ना, वो अच्छा उस पे आ रहा है. All right जी, okay, all of you प्लीज एक स्टूडेंट मुझे कमेंट कर दें कि स्क्रीन जो है शेयर हो रही है उनके साथ एंड Yes, sir. आवाज आ रही है. थैंक यू. Yes, sir. थैंक यू. प्रोग्राम ने इस पे लेकर आना है आप स्क्रीन पर. ऑलराइट जी, इम्यूनोफार्माकोलॉजी अगेन क्वेश्चंस रूटीन में इसमें से नहीं आते इतने ज्यादा, बट दे डू आस्क एमसीक्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक. तो इसको इस तरह से प्रिपेयर करें. रेयरली है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सी ड्रग्स एन्यूमरेट, आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए. वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फ्यू जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इम्यूनोफार्माकोलॉजी. रेयरली दे डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एज एन एससीक्यू. एमसीक्यूज रूटीन में आते हैं इस टॉपिक में से, वो मैं आपको बता भी देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर. इंपॉर्टेंट से बात करने का मुराद मेरी ये होती है कि लाइक जब ड्यू टू सम एक्सपीरियंस आई रूटीनली सी द एग्जाम्स, तो उसमें कहीं ना कहीं पता लगता है कि यार ये एमसीक्यू इस तरह से यहाँ से आ रहा है, तो वो फोकस टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट इट डजंट मीन कि वही आएगा. दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी जो है दे कैन फॉर्म एन एमसीक्यू. तो बट जो रिपीट हुए हुए यू शुड नो कि यार ये पहले आ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोबारा भी दे कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस. So when we practice the MCQs, what we get is we get the idea that the examiner is focusing on these topics. So the topics are become important. It doesn't mean that you have only to focus the important topic, but you should increase your focus on the important topic. आपने पढ़ना सारा है, लेकिन important topic का मतलब ये है कि वो मिस नहीं होना चाहिए. सपोज उसमें से क्वेश्चन आता है और फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे, यार मुझे पता भी था कि दिस वाज इंपॉर्टेंट बट आई डिडंट लर्न इट बाय हार्ट, या मैंने इस पे ज्यादा मेहनत नहीं की उस टॉपिक पे. तो उस टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा फोकस इंक्रीज किया करें. इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इम्यूनोफार्माकोलॉजी. अभी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं. इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंसेस टू अवॉइड इन्फेक्शन, डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन.
इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम एंटरिंग इट, ठीक है। तो वो किसी भी डिफेंस है आपका बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज एंड अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रोब्स। द इम्यून सिस्टम हैज evolved to protect the host from invading pathogens and to eliminate disease, यानी कि इट हैज प्रोटेक्ट करता है होस्ट को, पैथोजन इन्वेड ना करें, और एलिमिनेट डिजीज करने में हेल्प करता है बॉडी की। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज इज प्रोवाइडेड बाय द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। जब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, तो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो है इननेट इम्यून सिस्टम आ जाता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम आ जाता है, और अब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज जो आपकी बॉडी अगेंस्ट जो है वो करती है। नॉर्मल में आपका इननेट इम्यून सिस्टम है और एडेप्टिव है। अब नॉर्मल में देयर इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो आते हैं बॉडी के अंदर अगेंस्ट ड्रग्स या फॉरेन पार्टिकल्स। ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो जाती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जो है, ऑटो इम्यून बॉडी अगेंस्ट अपनी बॉडी के ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। देन कंपोनेंट्स ऑफ द इननेट इम्यून सिस्टम, अगर हम इसकी बात करें मैकेनिकल कंपोनेंट्स में जो है स्किन है, म्यूकस है, एपिडर्मिस है। बायोकेमिकल कंपोनेंट्स में जो हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रही हैं आपकी बॉडी को, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं लाइक डिफेंसेस, एंजाइम्स हैं, लाइसोजाइम, इंटरफेरोन्स, एसिडिक पीएच, फ्री रेडिकल्स लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, एनाइंस। सेलुलर कंपोनेंट्स में न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर इननेट इम्यून सिस्टम। देन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या होता है, बॉडी किस तरह से जनरेट करती है इम्यूनिटी। एक तो इननेट इम्यूनिटी है जो हमने अभी डिस्कस की है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो तरह की, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल इज व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटरनल साइड, दैट इज पैसिवली आ जाती है। और अगर सपोज एक्टिव इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होती है कि कोई भी पेशेंट को जब इन्फेक्शन होता है और वो उससे रिकवर कर जाता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। लाइक कोविड की भी आप बात कर सकते हैं, जो लोग रिकवर हो रहे हैं दे हैव मोर एंटीबॉडीज इन कंपैरिजन टू दोज जिनको खाली सिंगल वैक्सीन लगी हुई है, और जो है उनका एंटीबॉडी काउंट कम होता है इन कंपैरिजन टू दोज जो रिकवर्ड भी हैं कोविड से और जिनको वैक्सीन भी लगी हुई है, ठीक है। सो दे हैव पैसिव एज वेल एज एक्टिव इम्यूनिटी। देन आर्टिफिशियल, जिस तरह वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनाइजेशन हो रही है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो हम वैक्सीन लगवाते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है और पैसिव जो है एंटीबॉडी ट्रांसफर्स अगर हम कर रहे हैं, एंटीबॉडीज देर लगा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो दैट इज अगेन। सो इननेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की अगर हम बात करें, यू हैव read the details, I will just give the example. Like type 1 की एग्जांपल जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल इज एनाफिलैक्सिस, अस्थमा। टाइप 2 इज rheumatic heart disease, autoimmune hemolytic anemia, Graves disease, myasthenia gravis. Type 3 की एग्जांपल है serum sickness, rheumatoid arthritis. I'm sure you will read the more detail of these diseases in special pathology in your 4th year. But you should know the examples of type 1, type 2, type 3, type 4 hypersensitivity reaction, which are the part of your general pathology. So autoimmune disease arises when the body mounts an immune response against itself. अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेती है बॉडी, ड्यू टू फेलियर टू डिस्टिंग्विश सेल्फ टिश्यूज एंड सेल्स फ्रॉम फॉरेन एंटीजेन और लॉस ऑफ टॉलरेंस टू सेल्फ. दिस फिनोमेना derives from the activation of self reactive T and B lymphocytes, और वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं. Pathologic consequences of this reactivity constitute several types of autoimmune disease, are highly complex due to major histocompatibility जो है genetics, environmental condition, infectious entities. So these all lead to autoimmunity. Immunodeficiency disease result from inadequate function in the immune system. Consequences include increased susceptibility to infections. Immunodeficiencies are either congenital or arise from extrinsic factors such as bacterial or viral infections. Congenitally acquired जो है X-linked gamma globulinemia है, Digeorge syndrome है, severe combined immunodeficiency disease है. Can anyone comment what is a Digeorge syndrome? Yes. Anyone? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की अगर हम बात करें, मेरे जहन में नहीं है डाइजॉर्ज सिंड्रोम का, बट आई एम जो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इट इज ड्यू टू द जो थाइमस जो ग्लैंड है,
वो एब्सेंट होता है डायजॉइड सिंड्रोम में। और टी सेल्स की जो है क्योंकि जो ग्रोथ है वो इधर यहीं पे होती है, सो डायजॉइड सिंड्रोम इज उसकी वजह से इट कॉजेज अल्टीमेटली लीड टू इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपने पढ़े हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, एंड यू नो दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, सो दे हैव अ रोल, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। देन देयर आर calcineurin inhibitors, mTOR inhibitors, mammalian target of rapamycin, immunomodulatory derivatives of thalidomide, cytotoxic agents, immunosuppressive antibodies and monoclonal antibodies. अब इसमें ये है कि you should know the classification आपको पता होनी चाहिए, और single line mechanism of action with 1 to 2 adverse effect। इस टॉपिक में अगर आप इतना कर लें that is more than enough। कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसमें से MCQs रूटीन में आते हैं, और कोई पता नहीं अगर किस्मत खराब हो तो कोई SCQ भी आ जाए, कोई एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहे हैं एन्यूमरेट द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, एंड एक दो का वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है, सो डू इट स्मार्टली। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स क्लासिफिकेशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, calcineurin इनहिबिटर्स में साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, रूटीन में MCQ पूछते हैं ड्रग से, mTOR इनहिबिटर्स से सेरोलिमस, दे आस्क MCQs, माइकोफिनोलेट, मोफिडिल। माइकोफिनोलेट मोफिडिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक दफा पूछा गया है प्रॉफ में। थैलिडोमाइड, they do ask MCQ from this topic। So cytotoxic agents, azathioprine पे क्वेश्चन आ जाता है। साइक्लोफॉस्फामाइड जो है ये आपने एंटी कैंसर में पढ़ी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, विनक्रिस्टिन, मेथोट्रेक्सेट, सो दीज आर मोर और लेस एंटी कैंसर वाली ड्रग्स हैं, लेकिन एजाथायोप्रीन पे यहाँ से क्वेश्चन दे मे आस्क। एंड इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडीज, एंटीथाइमोसाइड एंटीबॉडीज, मोनोमोनैब, इम्यून ग्लोबुलिन जो हम IV देते हैं, एंड रो डी इम्यून ग्लोबुलिन, एंड देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो अगर हम calcineurin इनहिबिटर्स की बात करें, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसका सिंगल लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इज अ साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, और इसको यूज करते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। जब हम किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के जो जिनमें रेनल ट्रांसप्लांट हुआ होता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन पेशेंट्स में भी जो है हम चाहते हैं कि बॉडी का जो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो है वो रिएक्शन ना आए, तो हम उसको सप्रेस करने के लिए, ताकि जो है बॉडी वो ट्रांसप्लांट जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया वो एक्सेप्ट कर ले, तो हम पेशेंट की इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं बाय गिविंग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। सो calcineurin inhibitors like drug like cyclosporin, they have a role there, and in the treatment of selected autoimmune disorder। साइक्लोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बाइंड करती है साइक्लोफाइलिन के साथ, a member of a class of intercellular proteins called immunophilins। Cyclosporin and cyclophilin form a complex that inhibit the cytoplasmic phosphatase calcineurin। ठीक है, calcineurin कॉम्प्लेक्स को साइक्लोस्पोरिन जो है वो इनहिबिट करेगा, which is necessary for the activation of T cell। अब आपका T cell एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर आपका जो है बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होगा। So this transcription factor NF80 is involved in the synthesis of interleukins by activated T cells। So you have to remember कि जी cyclosporin जो है it inhibits calcineurin, which is necessary for the activation of a T cell। Adverse effects, nephrotoxicity। अब आप एक और चीज देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स में, calcineurin inhibitor साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट्स में H बड़ा कॉमन है, हाइपरटेंशन में H है, हाइपरग्लाइसीमिया में H है, हिर्सुटिज्म में H है। तो ये 3-4 तो आप H से ही याद कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हिर्सुटिज्म। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यू हैव टू रिमेंबर, MCQ आ जाता है कि जी साइक्लोस्पोरिन का एडवर्स इफेक्ट जो है मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सो दे आस्क दिस MCQ, and cyclosporin causes very little bone marrow toxicity। ठीक है, so this is about cyclosporin। tacrolimus same like cyclosporin उसी में ही आता है calcineurin inhibitor में, बस इसमें ये है कि while cyclosporin जो है वो बाइंड करती है साइक्लोफाइलिन के साथ बॉडी में, जो tacrolimus है it binds with the immunophilin जो that is F के बाइंडिंग प्रोटीन। both complexes cyclosporin भी और tacrolimus भी which are calcineurin inhibitor, they both inhibit calcineurin which is necessary for the activation of T cell specific transcription factor that is NF80। and tacrolimus मैंने आपको बताया cyclosporin जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, रूटीन में MCQs पूछते हैं cyclosporin is nephrotoxic, tacrolimus जो है it is less nephrotoxic। then is mTOR inhibitor, इसमें आपने याद रखना है sirolimus, sirolimus you have to remember important है। mTOR inhibitors पे मैंने काफी MCQs देखे हैं, रूटीन में आते हैं। mammalian target of rapamycin is a key component of complex intracellular signaling pathway involved in cellular processes, cell growth में, proliferation में,
एंजियोजेनेसिस में, मेटाबॉलिज्म में mTOR का रोल है, ठीक है, मेम्ब्रेनियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। तो अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो इट विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ इंटरलिकिन ड्राइवन टी सेल प्रोलिफरेशन। तो हमने टी सेल की प्रोलिफरेशन उसमें कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स में भी हमने वो रोकी है, इसमें भी हम वही रोक रहे हैं ताकि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड profound myelosuppression, especially thrombocytopenia, hepatotoxicity, diarrhea. Because nephrotoxicity is of major concern when administering calcineurin inhibitors, so sirolimus is frequently employed because renal toxicity is usually not seen. So nephrotoxicity is major concern of जो है cyclosporin का, तो sirolimus को हम ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज इसमें रेनल टॉक्सिसिटी कम होती है। और दूसरा ये है कि हम सिरोलिमस, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस जो है, सिरोलिमस कैन बी कंबाइंड विद साइक्लोस्पोरिन, बट टेक्रोलिमस को हम साइक्लोस्पोरिन के साथ कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस का मैंने अभी बताया, दे बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेप्ट दैट साइक्लोस्पोरिन बॉडी में बाइंड करती है साइक्लोफाइलिन के साथ और टेक्रोलिमस बाइंड करती है इम्यूनोफाइलिन के साथ, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इनहिबिट कैल्सिन्यूरिन, और कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करके वो प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स को डिक्रीज करते हैं। और मेजर साइड इफेक्ट जो साइक्लोस्पोरिन का है, जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। और सिरोलिमस को हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम होती है। सो माइकोफिनोलेट मोफिटिल is a semi-synthetic derivative of mycophenolic acid, inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, which is necessary for synthesis of purines. और in vitro जो है, it inhibits T and B lymphocyte responses, including mitogen and mixed lymphocyte response, probably by inhibition of de novo synthesis of purines, और GI upset और myelosuppression cause करता है। So you have to remember mycophenolate mofetil, इसका मुझे याद पड़ता है, कहीं पे मैंने क्वेश्चन देखा है, तो इसको कीजिएगा। बाकियों का भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए। सिंगल लाइन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी डेरिवेटिव्स थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड में से एक क्वेश्चन रिपीटली एमसीक्यू बार बार जो है, एक एमसीक्यू मैंने देखा है, इट इज अ टेराटोजेनिक ड्रग। तो टेराटोजेनिक ड्रग की जब भी वो बात करेंगे, या तो वो एमसीक्यू में पूछ लेंगे थैलिडोमाइड का एडवर्स इफेक्ट क्या है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिकॉज इट इज टेराटोजेनिक, फीटल जो है उसमें नॉर्मेलिटीज कॉज करता है, तो इट इज अ टेराटोजेनिक ड्रग। तो थैलिडोमाइड जो है, ये आपने याद रखना है, इसके हवाले से बार बार रिपीटेडली एमसीक्यू कम्स इन अ वे के जो है वो पूछते हैं और उसका टेराटोजेनिक ही उसका आंसर होता है। लाइक कभी वो टेराटोजेनिक ड्रग पूछ लेंगे, उसमें थैलिडोमाइड दी होगी, कभी वो थैलिडोमाइड के एडवर्स इफेक्ट्स पूछ लेंगे, उसमें टेराटोजेनेसिस आपने मेंशन करना है। तो यू हैव टू रिमेंबर टेराटोजेनिसिटी विद थैलिडोमाइड, प्लीज डोंट फॉरगेट। थैलिडोमाइड का ये बार बार एमसीक्यू आता है। is a sedative drug that was withdrawn from the market in 1960s because of its disaster teratogenic effects. It has significant immunomodulatory actions. Immunomodulatory ना, it means कि ये कहीं पे बॉडी की इम्यूनिटी को इसके दो तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। either it can increase as well the immunity and it can suppress as well the immunity depending on the dose. Thalidomide inhibits angiogenesis and has anti-inflammatory and immunomodulatory effects. It inhibits tumor necrosis factor alpha, reduces phagocytosis by neutrophils, increases production of interleukin-10, and alter adhesion molecules expression and enhances cell-mediated immunity via interaction with T cells. So used for multiple myeloma, SLE, and myelodysplastic syndrome. But you have to remember teratogenicity regarding thalidomide. बाकी चीजों को आप देख लें, adverse effect profile जो है इसकी, the most important toxicity is teratogenesis. Other adverse effect, constipation, hyperthyroidism, increased risk of DVT. So cytotoxic agents and antimetabolites. Antimetabolites, anyone? कौन सी ड्रग्स हमने एंटीमेटाबोलाइट्स में पढ़ी थी? Can anyone name the drugs? Please, third year. ये तो बताओ यार, कल पढ़ा अभी आपने ये ड्रग्स। हाँ जी। Captoprine, 5-fluorouracil, methotrexate. Thank you, Amna. Thank you. Yes, these are the drugs. Antimetabolites जो है, और ये भी जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स destroy immunologically competent cells. Azathioprine, again pro drug है, बॉडी में कन्वर्ट होती है। Pro drug is something which is in inactive form and when you take it, जब ये बॉडी में absorb होती है, it is converted into the active form. For purine antagonist, और ये कन्वर्ट होती है मर्केप्टोप्यूरिन में। 6 मर्केप्टोप्यूरिन इंटरफेयर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के साथ,
इसका हम डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं 6 mercaptopurine का कल. Widely used for control of tissue rejection in transplant surgery and is cytotoxic. तो ट्रांसप्लांट अगर किसी में रेनल ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट में, तो उन पेशेंट्स को हम ये ड्रग देते हैं. तो उससे होता क्या है कि जो अगर बॉडी के अंदर जो है टिश्यू रिजेक्शन आ रही है, तो हम उसको थोड़ी इम्यूनिटी सप्रेस कर देते हैं पेशेंट की फॉर द टाइम बिंग, ताकि बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर ले न्यू ऑर्गन को. तो एज अ थायोप्रीन रूटीन में रेनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं. It is metabolized to give mercaptopurine, a purine analog that inhibits DNA synthesis. Both cell-mediated and antibody-mediated immune reactions are depressed by it since it inhibits clonal proliferation. And this is all about the ये इसकी पिक्चर ले लें आप, ये स्लाइड अपलोड भी मैं कर दूंगा, बट प्लीज इसकी पिक्चर ले लें, आपको इतना ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंगल लाइन इसके आंसर्स दिए हुए हैं. बायोलॉजिक्स में अगर हम बात करें, टेनरसेप्ट, इंफ्लिक्सिमैब, TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं. rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. rheumatoid arthritis में इनका रोल है, एंड एडवर्स इफेक्ट्स इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शंस हो सकते हैं. एंटीबॉडीज इम्यूनोसप्रेसेंट जो हैं, अगर हम सिंपल मोरोमोनैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CD3 मॉलिक्यूल्स ऑन T lymphocytes, दे ब्लॉक द फंक्शन ऑफ T सेल्स. ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिएक्शंस में हम यूज कर सकते हैं, फीवर, हेडेक, वोमिटिंग कॉज करता है. एंटी ग्लोबुलिन which destroys T cells in acute renal transplant rejection, anaphylaxis and serum sickness cause करता है. And Rho-D immunoglobulin. What is erythroblastosis fetalis? Anyone? आपने फिजियोलॉजी में It is पढ़ा? when yes when सामना. an RH, she has a baby who is RH positive, and for the first baby, the RH positive cells, they leak into the maternal circulation, and antibodies against the RH factor are formed. And the next time she conceives an RH positive baby, these antibodies will attack the baby's blood cells. As a result, there will be the erythroblastosis fetalis will occur. Very good आमना. आई एम श्योर कि जो है when you class will come physically, तो आमना को जरूर एक चॉकलेट मैं दूंगा, बिकॉज शी इज कंटिन्यूसली आंसरिंग. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. और बाकियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया करेंगे. आई नो इट्स गेट्स डिफिकल्ट, ऑनलाइन में थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, मोटिवेशन भी कम होती है लेक्चर अटेंड करने की, लेकिन काइंडली थोड़ा सा जो है देख लिया करें चीजों को. सो Rho-D immunoglobulin is used. It is human IgG antibodies and are directed against Rho-D antigen on RBCs. तो वो हम देते हैं पेशेंट को टू RH नेगेटिव मदर विद इन 24 to 72 hours. काइंडली रीड, गो थ्रू स्लाइड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, गो थ्रू दीज, और जो है MCQs के हवाले से इस टॉपिक को रीड करें. एंड थैंक यू. Sorry. Sorry. यस मैम, कौन सा लेक्चर है?
Assalamualaikum. Can everybody hear me Yes, ma'am. clearly? Yes. I just keep on hearing one voice. Can I know the name? No, ma'am. Memuna? Amna. Amna. Okay, thank you, beta. So, did any one of you go through the notes which I posted? Or you were too busy preparing for the pharmacology term test? मैम क्लास टेस्ट था फार्मा का, वो पढ़े थे। वो पढ़ रहे थे। तो 13 से आप लोगों के और क्या हो रहा है? 13 को आपका टर्म टेस्ट नहीं शुरू हो रहा? मैम कल था हमारा फार्मा का क्लास टेस्ट ऑनलाइन। कैसे हुआ? LMS पे हुआ था मैम कल। हाँ, I know that, but आप लोगों का कैसा टेस्ट हुआ? Was it a good experience? Yes, ma'am. मैम SCQs भी दिए हुए थे ऑनलाइन लिखने के लिए, अजीब सा एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, so the difficulty was not with the MCQs but rather with the SCQs. उनको लिख के आपने उसकी पिक्चर लेनी थी ना? नो मैम, हमने ऑनलाइन टाइप करने थे LMS पे। तो पहले जो डिसाइड हो रहा था वो ये था कि आप लोग वो पिक्चर लेके तो आप पोस्ट करोगे ग्रुप में या जो भी था, तो probably वो चीज थोड़ी सी चेंज उन्होंने करके तो जब SCQs टाइप किए तो कितने कट एंड पेस्ट किए? क्योंकि करते हैं मैम सारे। पता उस टाइम जो समझ आ रही थी बीच में से स्किप करके कट करके लिखे थे क्योंकि 30 मिनट्स में 4 दिए हुए थे और उसके भी ABC पार्ट थे। ठीक, चलो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेट्स सी कि आगे हम किस तरह से इसको टेक फॉरवर्ड करते हैं। और आप लोगों का टर्म 13 को है ना फार्मा का शुरू हो रहा। लेट्स सी कि व्हाट इज डिसाइडेड फॉर दैट। अच्छा चलो, अब आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, एक तो आई हैव अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम डॉक्टर ज़ारा अबाउट यस्टरडेज आपकी जो प्रैक्टिकल था और SGD थी। शी वाज वेरी मतलब सेटिस्फाइड और बहुत कह रही थी बच्चों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आप लोगों ने थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेके और क्वेश्चंस को आप आंसर भी कर रहे थे और पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स भी दे रहे थे। एंड जितने बच्चों ने किया, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट नाउ एंड इट्स हाई टाइम, क्योंकि प्रॉफ का एग्जाम जो है वो आपका बहुत हद से थोड़ा बहुत ही आगे हुआ तो हुआ, वरना द डेट स्टिल स्टैंड। सो और बाकी जिन्होंने नहीं किया था, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करनी शुरू करें, सो दैट दिस टॉपिक एटलीस्ट पैरासाइटोलॉजी का आपका जो टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिसमें से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। और उन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर आपको पैरासाइट्स जो हैं वो डिटेल जिन पे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आए हैं, वी आर गोइंग टू गो थ्रू अ लिटिल बिट मोर डिटेल अबाउट दोज। और जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं, वी विल सॉर्ट ऑफ ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन एंड अ ब्रीफ नोट्स भी मैं बीच में आपको डालती रहूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू स्टडी द होल 3 or 4 पेजेस। वो सिर्फ अगर क्वेश्चन इन किसी सूरत में अगर उस पर क्वेश्चन आ जाता है तो देन यू वुड बी एबल टू start just attempt that question and get at least passing marks अगर आपने उसको और ज्यादा नहीं। But today what we are going to study are the blood and tissue protozoa, or these are very important blood and tissue protozoa, or इसमें से the most important thing which we are going to study is the malarial parasite. Malarial parasite, it's, as we know, it's a very common disease, and इसका जो parasite है that belongs to the group of protozoa, and then it belongs to the subgroup Sporozoa. And there are 4 different species. The genus is Plasmodium, and then there are 4 different species which can cause malaria. And the presence of the particular species depends upon the geographical distribution of the Anopheles mosquito, which is the vector for this Plasmodium species. So depending upon the type
of area where that particular species, for example, Plasmodium malariae is common, you will find malaria due to Plasmodium malariae and so on. So worldwide, it's about 40% of the world's population lives in endemic areas. It's more common in the tropics, subtropics, and the temperate regions. And you have about 500 or more cases, clinical cases per year, and there are a lot of deaths also associated with untreated malaria, especially because of one species which is known as Plasmodium falciparum. Every 30 seconds, there is a child somewhere in the world who dies of malaria, and especially in the African countries. Basically, this word comes from an Italian word which means bad air. Mala means bad and area means air. And you will find that the area where these Plasmodium species are going to be very common, that is in the swamp-bred mosquito areas. So any area which is close by a swamp in which you have a lot of mosquito population, or any area where there is stagnant water which forms a breeding ground for the mosquitoes, we have these lakes, sorry, we don't have a lake in Lahore, but we have that canal, whenever the water is going to be stagnant, standing, that becomes a breeding ground for the mosquito. 4 different species. Most commonly, we come across Falciparum, Vivax, Ovale, and Malarian. Out of these, Vivax and Falciparum, they are more not common in our area, but in the other parts of the world. And Falciparum is common in Pakistan as well, but in Pakistan, malaria is more common. And recently, there is a 5th species which is known as the Nolesi. The reservoir are the humans, and the vector is the Anopheles mosquito. If you remember, what is a vector? 108. What is a vector? Hassan? Anybody else? मैम ये डिलीवरी मॉलिक्यूल है, इसके थ्रू डिलीवरी होती है पैरासाइट की. It is a delivery vehicle. Delivery vehicle. So this is going to be a mechanical vector, which is it a mechanical vector or biological vector? In case of malaria, do you think it's a biological vector or a mechanical vector? Biological. Biological vector, because the Anopheles mosquito bites a person who is suffering from malaria, takes up the forms which are going to develop within the body of the mosquito, and then the bite is going to again inject the infective form of the Plasmodium species into a human, and that will start the cycle of malaria. Intermediate hosts are the humans, in which you have the asexual reproduction of the life cycle of the parasite, and whereas the mosquito is the vector, and it is the definitive host in which the sexual reproduction of the life cycle of the Plasmodium species takes place. So there are 2 parts of the life cycle. Number 1 is the asexual part, and number 2 is the sexual part. Asexual part takes place in humans, and therefore it is the humans are the intermediate host. Sexual part takes place in the mosquito. So mosquito becomes the not only the vector, but it is also known as the definitive host. All the yellow areas show the areas of the world where malaria is very common, and the tropics, subtropics, and the temperate regions. Transmission is through the bite of the mosquito. It can also be transmitted through blood which has been contaminated with the from a person who has suffered from malaria and is harboring the morphological forms of the Plasmodium during a transfusion. Very uncommon methods of transmitting the Plasmodium species are sharing a contaminated needle and syringe, and this mostly occurs in drug abusers. And congenital malaria is also very, very rare. So the most common mode of spread is through the bite of a mosquito. Less common is if you are giving a blood transfusion and the blood came from a person who was suffering from malaria, and the other methods, they are very, very rare. That is why
nowadays, when we are using a blood bag, we are screening it not only for hepatitis and HIV, we are also screening it for the malarial parasite. So these parasites, they are normally transmitted from one human host to the next by the bite of an infected female mosquito of the genus Hemolysis. And the infective form which the mosquito is going to inject into a human being, that is known as the sporozoids. And these sporozoids are then injected, when injected into a human being, they are going to enter the circulation and the life cycle is going to start from there. Anopheles mosquito, more than 422 species in the world, and that forms the vector for the Plasmodium. And we've discussed that it is more common in the tropics and the subtropics. Morphologically, there are 6 or 7 different forms of this parasite, which you will see within the human blood slides if you are looking for the diagnosis of a person with malaria. Hepatic Scheizon, ring forms, which are the early trophozoites, so the young trophozoites, and then there are the mature trophozoites, and there are the Schiazones, Merozoites, and the Gametocytes. So let's go through them one by one. Hepatic Scheizon, this is a hepatic Scheizon. It's a multinucleated cell, and it is actively dividing so that once the infective form of the parasite, which is known as the sporozoid, that gains entry into a hepatic cell, it starts multiplying rapidly. And this rapid multiplication gives this form which you can see. This is a hepatic cell which has been infected with the sporozoid. The sporozoid, once it goes into the cell, it starts undergoing binary fission and it starts producing different types of cells. And once the large number of nuclei are present in that hepatic Scheizon, then it is going to burst, and these merozoites which are going to be released, they are then going to go and infect newer hepatic cells. In all of this process, there is no inflammatory response. So it's a silent process. It's not going to produce any inflammation or response from the human individual. Number 2 are the hypnozoites. Hypnozoites, they are the dormant forms in the liver. And this is very important in association with infections with Plasmodium ovale and Plasmodium vivax. Because these dormant forms, once the sporozoid goes into the cell, it rounds up, and these rounded structures, you can see they are multiplying, and they are multiplying, and they are going to then burst off, and they are going to release these merozoites, and they are going to infect other hepatic cells. This is what happens normally. But some of these cells, they do not multiply. They just remain dormant within the hepatocyte. They are going to sit there. And when they are going to sit there, they are going to be there for a pretty long time. And this time can be 3 to 4 months, before which they become activated, they start multiplying, and then they start causing an infection. So these dormant structures which are seen in the hepatic cells, which are not multiplying, they are known as the hypnozoites, and they are associated with Plasmodium ovale and vivax infections, and they are therefore responsible for the relapse of malaria. A person has an infection, initial infection, and then he feels all right and he becomes cured, and the individual feels that now I don't have any malaria infection. But 3 to 4 months down the road, he again develops an infection, and in most of the cases, it is because of the reactivation of these hypnozoites, which were dormant in the liver. Is this clear? Is this point clear? Yes, ma'am. Then we have the ring forms, which are also known as the early trophozoites. And this is seen within the RBCs. So once these merozoites or these structures, they are released after the breakup of the hepatic cells, some of them will go into the circulation. And once they go into the circulation, they are going to go and invade the RBCs. And the initial structure which is going to be formed is known as a trophozoite. And this is the early trophozoite is the young form, and you will see that there is a blue cytoplasmic ring, and there is a red chromatin dot. This is a vacuolated area, so this is a clear area, and this vacuole appears as a clear halo when you see it under the slide. So these are the trophozoite forms which would be seen within the RBC. Then we have the mature trophozoite form, and this is going to vary
with the type of the malarial parasite, and this also becomes a feature which helps us in distinguishing between various species of the Plasmodium. So whenever we have a patient which we suspect with malaria, we want to know that which species of Plasmodium is infecting that person. For that, we make a smear from the blood, and we are going to look for these various forms, and the various forms will give us an idea about or a clue about the species of Plasmodium which is the person is being infected with. Why it is important to know the species? Because the treatment is very important. In case of Plasmodium malariae, Virex and Opale, they are associated with different types of complications. The most serious one is the Plasmodium falciparum, because if this is present and if the proper treatment is not given, then the patient can develop a lot of complications and may even die. So in this case, we have this chromatin material, cytoplasmic ring, and this is the red chromatin material. At the same time, pigment is being produced because of the metabolism of this parasitic form, of these trophozoite forms, and this brown pigment would also be seen within the RBC. Here, the trophozoite is now taking up more space, and depending upon the species, it will cause an enlargement of the RBCs as well. So this is a metabolically active form which lives within the RBCs. The next stage is the Schizone. Schiazones are also two types, immature Schiazones and the mature Schiazones, and the difference is in their developmental stages. So this is again a part of the asexual erythrocytic phase of the life cycle. There is active chromatin multiplication, replication, division, and then the accumulation of cytoplasmic material around them. So what is happening in this stage is that the cytoplasm is becoming concentrated around smaller chromatin bodies, and ultimately it is going to divide and form small structures, each one of which will have a chromatin material as well as a cytoplasmic material. And then you can see these brown pigments as well. Similarly, the majority of the space is now going to be utilized by the presence of this malarial parasite. So as it is growing, it is going to invade the whole RBC. And as it matures, you will see that these are going to be sectioned off. And once these are sectioned off and they're mature and the RBC ruptures, each of these would be individually released into the circulation, and each of these individual structures, they are known as the merozoites. So it started with a ring form, and then it went into started with this ring form in the RBCs, and this is also known as the erythrocytic phase of the life cycle of the Plasmodium. So it starts with a ring form, and then it goes into the trophozoite stage, and then from the trophozoite, it is going to go into the Schiazone stage, which ultimately results in this structure in which you have multiple small structures, each of which has a chromatin material as well as a cytoplasmic material around it, and they are going to disintegrate, and each of these structures is known as a merozoite. And this helps in the spread of the malarial parasite throughout the body. So this, as you can see, is the Schiazone, which is made up of a lot of merozoites. And once these merozoites are going to be released, they can go into the other RBCs and they can infect the other RBCs. And this whole cycle is going to be repeated over and over again. But some of these then may go and change into the forms which are going to then convert into the gametocytes. So two cycles are going on. Number one is the merozoites infecting the other merozoites. And then number two is some of these merozoites, they will go into the circulation and they will change into the gametocytes, which are the sexual forms of the parasite. And these gametocytes are going to be taken up by the mosquito. And the mosquito, they will convert them into the sporozoites. And these are the infective forms which, when injected into the human being, they are going to go into the circulation and then into the liver. Two types of gametocytes, micro and macro. Microgametocytes, basically, these are also known as the male gametocytes. And it's a sexual erythrocytic stage. And depending upon the species, they will have different forms. Most of the three species are going to have a rounded structure, whereas in case of Falciparum, they have a crescent-shaped or a banana-shaped structure.
Over here, the chromatin material is diffuse. It's not concentrated at one point, and it is surrounded by the cytoplasm, which is a pale colorless halo around it. In the macrogametocyte, again, it could be round, it could be oval, but over here, the chromatin material is more concentrated, but it is never in the center. It is towards the margin of the cytoplasmic material. So the homogeneous cytoplasm, and this is the chromatin material, which is going to be towards the side. There can be pigment in it, and again, in case of Plasmodium falciparum, it is going to be banana or crescent shaped, whereas in the others, it is oval or round in shape. Last of all is the sporozoites, and these are the morphological forms which are going to develop in the salivary gland of the mosquito. And these are the infective forms of the parasite. These are the forms which are going to initiate the infection. So whenever somebody asks you which is the infective form of malarial parasite, you do not say the Strophozoites of Schiazones. It is the sporozoid, which comes from the saliva of the mosquito during the bite of the mosquito or when it sits on the human skin and injects that saliva into the tissues from where it goes into the circulation. So this sporozoid, it's a sickle or a C-shaped structure which has a flat nucleus and very tapered pointed ends. When we talk about the life cycle, we are talking about a life cycle which has two components. Number one is in the mosquito, and the number two is in the humans. The life cycle in the mosquito is known as sporogony, where because we are producing the sporozoites in that mosquito. And in humans, it is known as schizogony. And the schizogony has three different phases: the pre-erythrocytic phase, then the erythrocytic phase, and then the gametogony. Pre-erythrocytic phase takes place within the liver. The erythrocytic phase is within the RBCs, and the gametogony is the conversion of the neurocytes into the gametocytes. And this also is taking place in the circulation. Over here, we have three different parts of the life cycle of the, I'm going to show you a few diagrams. You are going to select one which is going to explain the life cycle and which is easier for you to understand. And when you are attempting a question, because life cycle of Plasmodium is asked a number of times. Antamoeba ki life cycle, uski pathogenesis, uski complications, life cycle of Plasmodium, its life cycle, its pathogenesis, its complications, its different name of different morphological forms. These are two important and very often repeated questions if you look at the past papers in parasitology. So I've divided this into three components. 1 to 5 is the component which occurs in the liver. 6 to 12 is the component which occurs in the RBCs. And 13 to 20 are the components which occurs in the mosquito. And in the mosquito, the sexual part of the life cycle of the Plasmodium, it takes place. And this starts with the mosquito taking a bite from a human blood, and once that human blood is taken up, the microgametocytes go under through different phases, and they are going to, the male and the female gametocytes, the micro and the macrogametocytes, they are going to mate in the stomach of the mosquito. They are going to form a zygote, and this is the similar to the formation of when the sperm and the ovum, they meet together and they form one combined cell. This is similar to that. And this is known as the oocyst. And this oocyst is going to convert through different phases into the sporozoid. And this sporozoid then comes and settles down in the salivary glands of the mosquito. And in the salivary glands of the mosquito, when it is there, it is then going to be injected along with the saliva into the skin of the humans when it bites for a blood meal. So whenever a mosquito is sitting for a meal on the human skin, initially it is going to inject the saliva so that the tissue over there becomes a little damaged, and then it is going to suck up the blood. So with the initial inoculation, it is going to inject the sporozoites as well. Clear? So this is another way to explain the whole cycle. This
is the in human beings, which is bitten by the Anopheles mosquito, the definitive host. This person is the intermediate host. When the blood is taken up by the Anopheles mosquito, both macro and microgametes are taken up, and these are going to undergo the process of exflagellation, and these are going to unite in the stomach of the mosquito to form a zygote, which converts into an ookinete, and this is going to then go through the different stages to form the sporozoid, and these are going to settle down in the salivary gland, and they are going to be transferred to the humans during the bite. So if this makes it more sense and more easier for you, you can use this life cycle. Number 2 is the asexual life cycle, and part 1 of the asexual life cycle takes place in the liver, and this is also known as the exoerythrocytic Scheizon. It takes about 5 to 16 days, and what happens is that when the mosquito is going to inject the sporozoids, most of them, they are going to go, and through the blood they are going to travel to the liver, and in the liver they are going to invade the hepatocytes. Once they are invading the hepatocytes, they convert themselves into these rounded structures, and this is going to then start multiplying the binary fission, and this is going to form a mature Schiazone. And this Schiazone, as we discussed, contains a number of merozoites, and when the cell is going to rupture, these merozoites are going to be released. They will enter the capillaries in the liver, and then they will be carried into the they will be present in the blood, and in the blood you have the RBCs. Then the second stage of the asexual life cycle of the Plasmodium will start. The asexual life cycle is known as, the second part is known as the Erythrocytic Schizogony, because it is taking place within the erythrocytes. And this is starting from the invasion of the RBCs, conversion into the different forms, trophozoid, the Schiazone, and then finally the formation of the merozoids and the bursting of the RBCs, releasing the merozoids. These merozoids can be taken up by newer RBCs, and this cycle is going to be repeated. So when the merozoids, they enter the RBCs, what is the fate of that RBC? It will either rupture and the merozoids would be released and they will infect the other RBCs, or it can convert into the gametocytes, the micro and the macrogametocytes, which, if a person is bitten by the mosquito, will be taken up by that mosquito, and it will help in the spread of malaria in the community. And thirdly, these RBCs which are infected, they may be destroyed by the immune system. So this is going to contain, if this becomes activated, it is going to contain the infection. This will form, this is going to help in the spread of the infection. And this is again going to produce various complications of various signs and symptoms in the disease, in an individual. And this is also going to maintain the presence of the infection in the individual. Now, the erythrocytic cycle. Erythrocytic cycle, from the liver, the merozoids are going to enter the RBCs, and the RBCs, you have these early trophozoid forms, late trophozoid forms, and these late trophozoid forms can develop into the Schiazones, which can be converted into the gametocytes, and this cycle goes over here. Or they can convert into the merozoids, and these merozoids, they can enter the RBCs, and this cycle is going to be repeated continuously. So this is another way of explaining the things. Whatever is easier for you, I will upload these diagrams, whichever suits you, that makes it easier. And whenever you are attempting the life cycle of a malarial parasite, please mention not only one, but both the life cycles. The whole is a composite. You have to, I'm breaking it up into pieces so that it makes it easier for you to understand. But if you are using this diagram, then this diagram needs to be coupled up with the asexual part of the life cycle as well. So you have to add these two diagrams together to remember the life cycle, number one, and number two, add a few bits of points here and there which are going to explain the life cycle, so that you are the examiner is very clear that you know the topic and you know the life cycle of the parasite. So this is the
asexual part of the life cycle, and this is the both the two cycles, they are combined together. So whatever I was talking about, you can either use this whole diagram as a reference point for the life cycle, because it becomes easier. You don't have to make any figures or anything except for a few representative forms of the parasite. Any questions till this point? Anything which you would like to ask? No questions? मैम जब हमारा मॉस्किटो करता है ब्लड सर्कुलेशन में हमारे पास जाते हैं स्पोरोजॉइड्स, तो वहां पे ब्लड साइकिल स्टार्ट नहीं होता, लास्ट उसमें पहले लिवर में चेंज होना फिर ही मीजोसाइट्स करेंगे। हाँ, जो आपकी when they are जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो इंट्रोड्यूस होके वो जब ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो ब्लड इज जस्ट एक्टिंग एज अ चैनल टू टेक इट टुवर्ड्स द लिवर। ठीक है, वहां वो किसी आरबीसी, क्योंकि स्पोरोजॉइड्स जो है वो आरबीसीज को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। स्पोरोजॉइड्स पहले लिवर हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करेंगे, उनकी चेंज होगी मॉर्फोलॉजी, वो मॉर्फोलॉजी जब चेंज हो जाएगी, उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो उनके अंदर चेंज आता है, वो वाले जो फॉर्म्स हैं, दोज आर द फॉर्म्स व्हिच आर एबल टू अफेक्ट द आरबीसी। सो अगर स्पोरोजॉइड सर्कुलेशन में ही रहेंगे तो वो आरबीसीज को दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेड द आरबीसीज। ठीक है, तो पहली साइकिल जो है वो होगी ही स्पोरोजॉइड्स की, शुरू ही तब होगी जब वो हेपेटोसाइट्स के अंदर जाए, उसके बाद उसके फॉर्म्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर फॉर एनी रीजन स्पोरोजॉइड्स डू नॉट रीच द लिवर, so they will keep on circulating in the blood, they are not going to infect the RBCs. ठीक है? Okay. So one important thing is a relapse. हमने पहले भी बात की थी कि in some Plasmodium vivax and ovale relapse होता है। Relapse इसलिए होता है because the organisms which are the merozoites, they go into the when they are infecting the hepatocytes, some of them they remain dormant over there, they are going to sit over there and they are not going to produce a they would not start multiplying. So sporozoites, when they are going to go into the hepatocytes, they will initiate the pre-erythrocytic schizogony. अब pre-erythrocytic schizogony में अगर for example 50 sporozoites जाते हैं, तो maybe 40 of them are going to go into the erythrocytic schizogony or primary malaria produce करते थे, but 10 of them will remain silent and will not multiply. They will keep on sitting in the hepatocyte, and after maybe 3 weeks or 3 months, they are triggered off to start multiplication. उसके बाद merozoites जो produce होते हैं, they start the erythrocytic schizogony, and this is the relapse. So प्राइमरी मलेरिया तब होता है जो पहली इनिशियल इन्फेक्शन से पूरी साइकिल हो जाती है और वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देता है। रिलैप्स तब होता है जब जो इनिशियल इन्फेक्शन थी उसमें से कुछ फॉर्म्स जो थे दे बिकेम डोर्मेंट एंड दे रिमेन्ड विद इन द लिवर सेल्स, एंड आफ्टर एट अ लेटर स्टेज व्हाटएवर द रीजन, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट कि किस तरह से वो इनिशिएट हो जाता है या क्या चीज उसको इंस्टिगेट करती है, बट दे बिकम एक्टिव एंड दैट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। उस फेज की वजह से जो मलेरिया होता है दैट इज नोन एज अ रिलैप्स। ठीक है, एंड प्राइमरी मलेरिया और रिलैप्स के दरमियान में ब्लड के अंदर कोई भी पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती। सो प्राइमरी मलेरिया के बाद द पैरासिटिक फॉर्म्स फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड फिल्म दे आर एब्सेंट, सिम्टम्स आर एब्सेंट, द पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, जब रिलैप्स होता है तो देन अगेन यू स्टार्ट seeing the symptoms and you start seeing the forms in the peripheral smear, and this occurs in vivax and ovale. ठीक है, और जो dormant होते हैं वो they are known as the hypnozoids as we discussed before. ठीक है, is this clear? Because this is also a very common viva question कि relapse, what is a relapse in case of malaria and which are the two species which are going to produce a relapse. Falciparum or malaria में relapse नहीं होता. There is a pre-erythrocytic schizogony which goes into the erythrocytic schizogony and primary malaria. There are no dormant forms, so there is no erythrocytic schizogony after a time period, and therefore there is no relapse. Clear? This concept is clear, beta? Yes, ma'am.
आमना के अलावा किसी को समझ आई? I'm still waiting for your answers. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So pathophysiology. अब RBCs में जो trophozoites से Schiazone forms हैं, they are the forms which are producing all the disease pathogenesis. Liver में there is no pathology, neither the Schizons nor the Sporozoites nor the Hypnozoids, no form is going to produce any damage to the liver. Damage is occurring in the RBCs, and because of that damage, you are going to see the signs and symptoms in an individual. So RBC destruction occurs, number one, by the parasite, because the parasite is invading the RBCs and it's causing the destruction. Because जब RBC rupture होते हैं, तो merozoites are going to be released. Then number two is the immune response of the individual may contribute to the hemolysis of the RBCs. जो infective forms हैं, उनको immune system आपका destroy करने की कोशिश करता है, and that also results in the RBC destruction. Then the destroyed or the forms which are not normal, they go into the spleen where they are held back. So this also results in the RBC destruction. Number two, then they can be the antigen antibody complex formation and they get deposited in the kidney. Number three is the Schiazones of the Plasmodium falciparum. They have a tendency to stick to, they have certain substances on their surfaces which allow them to stick to each other, which make the RBCs stick to each other. And these RBCs, they form small knobs, and these knobs, they become impacted in the smaller in the smaller capillaries. And wherever in the smaller capillaries, ये blocks of RBCs जाके settle down कर जाएंगे, it would result in blockage of that vessel, and the area beyond that will not receive any blood supply. Consequently, that area will become infarcted. Then cytokines and other inflammatory mediators will be released, and they are also going to contribute to the damage which is produced because of the plasmodium. Coming to the symptoms of the disease. Typically, the patient is going to be asymptomatic following a mosquito bite. It takes about 6 to 7 days, but it depends. This incubation period is variable depending upon the type of malaria we are discussing. So in case of type Plasmodium malariae, it will be different from that which is present in Vivax and Ube. But once the organism goes into the erythrocytic phase, that is the time when the symptoms are going to start, because number one, the RBCs are now being destroyed. They are rupturing and they are releasing the toxic material. They are also releasing the merozoids, and they are also contributing to the inflammatory response. And this is the time when the first attack of malaria is going to occur, and this has 3 phases. The first phase is that of chills and fever, and the person is going to have he will feel cold, and this chill phase can last for 10 to 15 minutes or even up to an hour or so. And then once the chills they pass off, then the patient starts developing a fever, and this fever will stay there for about 2 to 6 hours or even more. Then fever falls down, it comes to normal, and the patient starts sweating profusely. And this is the phase of sweating and then everything comes back to normal. So, and this phase also has different time periods and intervals, and this is going to vary from one type of malaria to the other. Apart from that, patient may have headache, lethargy, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, and there can be hemoglobin low. And when you see, then you will see the iron deficiency anemia, or you will see the microcytic anemia. There may be involvement of the CNS and kidney in case of complicated cases, or when the treatment is not being given. So the first phase is the phase of the cold phase, when the patient has an intense cold, starts shivering, and this shivering lasts for about 15 to 60 minutes. Then the second stage is the stage of fever, and that is the hot stage, when the patient feels extreme heat. He throws off all the clothes which we had on him because of the shivering, and
because during the first stage, he is feeling so cold that the comforters and the blankets, he wants them to be piled out on top of him. And when the hot stage starts, he starts throwing off all the sheets and the blankets off him. The skin starts burning, there is intense heat, there's a throbbing headache, and this can last from anywhere 2 to 6 hours. And once the fever starts settling down, then the patient has extreme sweating and becomes exhausted, weak, and then he goes off to sleep, and this may last for 2 to 4 hours, and then the whole cycle is repeated. So this is the cycle which occurs in case of malaria. The durations, they change depending upon the species. So what are the effects which the malaria can have on our body? It can affect the liver, it can affect the kidneys, it can affect the RBCs. Number one is the fever. Fever is the hallmark of malaria, and it occurs when the erythrocytes rupture, merocytes are released, and along with the merocytes, you have the pyrogens which are also going to be released. Because of the inflammatory mediators, there will be vasodilatation, there will be hypotension, and this occurs in response to the high fever. So pyrogen is going to induce all these features. Number two is the anemia, and this is because of the RBC destruction. Then number two is that the RBCs which are infected, they are also phagocytosed, and they are also going to decrease, this is also going to decrease the RBC count. We have other factors like thrombosis, capillary hemorrhage, and the bone marrow function is depressed. And all these contribute to the low hemoglobin and the low RBC count. And most marked anemia is seen in patients with Plasmodium falciparum. And in a minute or so, we will know what is the reason for that. Then the malarial pigment, which is produced, it is known as hemozoin. This can be taken up by the phagocytes in the lymphoid tissue, liver, spleen, and the bone marrow. And when this amount becomes high, or when this process is continuing and treatment is not being done, then this can result in the pigmentation of the organs. Hepatosplenomegaly and hepatomegaly, splenomegaly, they're also the characteristic features of the malaria, which is long-standing. Capillaries can be occluded or blocked because of the parasitized red cells. What happens is that these red cells, they stick to each other, and then when they are moving in the circulation, because of this stickiness, they can get attached to the endothelial lining of the blood vessels, and in the smaller vessels, they are going to completely block them. Then we have the intravascular hemolysis in the kidney. This phenomena of attaching to the epithelial cells can also occur in the kidney, and over here the smaller vessels, they rupture, and they are going to release the hemoglobin, and this hemoglobin can come into the blood and into the urine, and this results in a very dark colored urine, and this results in the complication of Plasmodium, which is known as black water fever. We've talked about the dormant hypnozoids, and we've talked about their relapse. Then two things. Number one is that individuals who are RBC antigen Duffy negative. We have an antigen on the RBC, which is known as the Duffy antigen. And all those individuals who have a negative Duffy antigen, they are going to be resistant to Plasmodium vivax. And this is a resistance which is present in these individuals as a gift from nature. So it's a genetic thing which is present in some individuals. Then number two, persons who have sickle cell disease. Sickle cell disease individuals, they develop less severe Plasmodium falciparum malaria. So these are the two genetic conditions which gives protection to these individuals from Plasmodium species. Complications of falciparum, vivax, and malaria. These are the complications from falciparum, vivax, and malaria, and you need to know these names because it's an important viva question as well. Why is the Plasmodium falciparum most dangerous of all the falciparum species? Why? Why is it the most dangerous of malarial parasites? Number one, falciparum infects RBCs of all ages. Number two, the malarial cycle, it is occurring every 48 hours, and it is also it is producing a malignant type of a malaria. Malignant, why? Because it produces a very severe form of malaria.
So it is known as a malignant tertian malaria. About 65% of the erythrocytes are infected in case of Plasmodium falciparum. 35% are normal, 65% will have parasites in them. Infected RBCs can attach to the uninfected RBCs, and this will form a group which is known as a rosette. And these rosettes, they can go and block the smaller vessels. So all over the body, the Plasmodium falciparum is producing damage, not only to the RBCs, but also to the blood vessels. This is going to add up the damage which is occurring in the body, and it is going to produce a more severe illness in an individual. Why are the erythrocytes infected with Plasmodium falciparum, Trophozoites, and Schiazones not seen in the peripheral circulation? Both of these are viva questions. Why? Because the Trophozoites and the Schiazones, they are the early stages of the Plasmodium falciparum cycle, and they are going to, when these RBCs are infected with these forms, they are more likely to form those rosettes, which are going to go into the smaller capillaries, which is not a part of the peripheral picture of the blood. So all these structures, all these RBCs which have the Trophozoites and Schiazones of Plasmodium falciparum, they tend to go and settle down in these smaller capillaries. And when we take a blood sample, we are taking it from the peripheral blood vessels. So you will not see these erythrocytes in the peripheral circulation. Coming to the diagnosis, we have two types of diagnosis. Number one is the clinical, which is very, very important, and the patient will give you the history of fever, chills, the cycle which we've seen, indicating the typical periodicity of the fever. Then you can have a history of being in an area where mosquitoes are very common. In severe cases, there may be anemia, there may be splenomegaly, there may be hepatomegaly, and other consequent symptoms. Laboratory diagnosis depends upon the microscopy, which is the most important identification tool. And we make two types of films. Number one is a thick film, and number two is a thin film. All of you know how to make a smear from a bacteria. You've already done the gram staining, and you know that we make a smear with a bacterial suspension on a glass slide, dry it and stain it with the gram stain, and we can see it under the microscope. In case of malaria, what we do is we take a blood drop and we put it onto a glass slide and we make a smear with it, dry it, we stain it with the Giemsa stain, and then we see it under the microscope. And if the clinical history is suggestive of malaria and the smear is negative, then we can repeat it for every 12 hours for 48 hours till we say that it is negative. So in microscopy, we make a thick smear and we make a thin smear. What is the difference between the two? Thick smear, we have a drop of blood, we leave it over there, we just mix it over there, and then we stain it. And this is going to be a small amount of a drop of blood, which is going to be in a small area. So it's very easy to see under the microscope, to see the whole area under the microscope. And this will just tell us that Plasmodium is present or not. So the thick smear is a quick way to see whether the blood contains any Plasmodium or not. Once we are confirmed that the Plasmodium is present, then we make a thin smear. Again, the drop is the same, but we are going to spread it with the slide so that we have a thin smear in which the whole element or all the RBCs, they are spread out with each other. And then we can go through the slide in a systematic manner. And this will help us in telling in two ways. Number one, it will tell us out of 100 RBCs, how many of them are having the parasite. That is the percentage parasitemia. And number two, it will help us in the identification of the Plasmodium species. So when you are attempting the question of lab diagnosis, the number one diagnostic feature which are you going to write is the microscopy. Then you are going to write the thick smear, and it will help in the presence of the Plasmodium. Number two is the thin smear. It will help in the identification of the Plasmodium species and in the percentage parasitemia. These diagrams are just for your understanding. So what you need to write down is the first diagnostic tool is the microscopy, thick smear, presence of Plasmodium, thin smear, identification of Plasmodium species, and the percentage parasitemia. So this is the actual thing which we do in the lab. This is a thick smear. You can see the whole drop of blood over there, and over here you can just
see a very thin pink colored film on the surface, you can really not identify where are the margins. So this is the thin smear. Microscopic features which are going to help you in identifying the different species. In case of Falciparum, 65% of the RBCs would be infected. Vivax, ovale, and Merelli, this is going to be very low. RBCs, all of the RBCs are going to be affected. In Vivax, it is the immature RBCs, whereas in the Malaria, they are the older and mature RBC types. The size will remain normal in case of Falciparum, whereas in case of Vivax and ovale, it is going to enlarge. In case of Malaria, in most of the cases, there is no enlargement of the infected RBCs. This you need to write down if the question asks what are the different forms of the parasite which you can, what are the RBC changes which you can see in Plasmodium infection in case of a peripheral blood film. If you add it to your diagnosis, it is going to give you extra marks. These are the different forms, the shapes. Sometimes a question is worded in such a way that you have to draw these diagrams. So this is the simplest picture I could find which would help you in attempting that question. Third is the serological diagnosis, which is not used in acute cases. It's really not very helpful because the antibodies which develop after a malarial attack, they persist, and you will not be able to differentiate between an acute and a chronic malaria or a past attack until and unless you do the IgM and the IgG antibodies. And the most frequently used test is the indirect fluorescent antibody test and the ELISA as a serological tool. Fourth is the PCR, and the PCR also detects the nucleic acid of the parasite, and it is more sensitive but limited value because number one, it's very expensive to carry out the PCR, and number two, you need the patient to start on the medication, and if your clinical history is indicating that the person is suffering from malaria, you do not really need a PCR. These are the various forms of the malarial parasite and the stages, what you are going to see in them. Number two are the incubation differences between the incubation period, the fever pattern, the periodicity. I'll share these slides with you so that you can go through them at your convenience, and you can make these your learning tool. These are actual pictures which you can see when we are making a film, and this was just for interest. I just put them inside so that you can, this is the ring form which you can see, and this is in case, this is another ring form over here. In Vivax and Malaria, Falciparum, you have multiple rings. These are the trophozoid of the band forms. These are the merozoites, which you can see in them. Over here, these are the merozoites. Over here, this is the merozoite. And this is the banana-shaped gametocyte form, which you can see in the Plasmodium falciparum. Two complications which need to be mentioned. Number one is the cerebral malaria, and number two is the black water fever. Cerebral malaria is labeled as malaria with falciparum, and number two is that the patient goes into a deep coma. There is a history of malaria which indicates that the person may be suffering from Plasmodium falciparum, and the patient is in a deep coma. Apart from that, complaints of fever, there can be anemia, tachycardia, the pupils are reactive to light but mid-sized, they can be hemorrhages, retinal hemorrhages. A positive Babinski sign is basically, this is a sign which occurs when you are sort of on the foot, at the sole of the foot, if you strike it with the, not strike it, rather you make a stroke with the key from the heel to the toe, then normally what happens is that a normal individual, the big toe is going to curl downwards. But in case of patients with cerebral malaria or some other neurological illness, the toe is going to stand up. It is going to go up instead of going down. So that is known as a positive Babinski sign. There can be other cranial nerve abnormalities and muscle tone abnormalities. So any of these symptoms may be present, or all of them may be present. Pathogenesis of cerebral malaria, it develops when the RBCs, they adhere to the cerebral microvasculature, causing blockage of the blood vessels.
And basically, it is the Plasmodium falciparum which is parasitizing these RBCs. The area beyond the blockage, there is a shortage of oxygen and nutrients to those areas, and this can occur diffusely throughout the brain. And this is seen in all the patients who are suffering from cerebral malaria. The second complication is black water fever. It's again a complication of Plasmodium falciparum infection. And in this case, the patient has fever, hemoglobinuria, that is the hemoglobin is coming in the blood, the hemoglobin is coming in the urine, and there is bilirubin in the blood. They can be the patient can complain of oliguria or the less passage of urine in the during the day, or even complete absence of urination. And the urine is Coca-Cola colored or dark brown colored. And this is the reason for black water fever is that the RBCs, they are heavily parasitized beyond 65%. And when these RBCs are going to burst, they are going to release the hemoglobin. And this hemoglobin causes intravascular hemolysis. This hemoglobin can also cause damage in the kidneys. And then therefore, when the kidneys are damaged, it is going to leak into the urine. And there it is also going to cause damage to the tubules of the kidneys. This can result in renal ischemia. This can go into the complete shutdown of the kidneys as well. This is the difference between the two. This is normal colored urine, and this is the urine in case of a black water fever. Usually black water fever is seen in non-immune individuals, also in individuals who may have had exposure, but now due to some immunocompromised state, their immunity is low. Number two, it is also seen in some individuals who have a sensitivity to quinine. So if they have been previously treated with quinine and they have a second episode of infection with Plasmodium falciparum, they can develop this complication. Nowadays, this is a very rare complication. Then persons who have a deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme, they may develop hemolysis if they are treated with drugs like trimethoprim. So basically, most of the cases, it is related with the low immune response, or it is associated with some sensitivity to the antimalarial drugs like quinine and trimethoprim. Any questions? No questions? No, ma'am. No, ma'am. I need a feedback from you regarding the documents which I posted, or the lectures notes or the notes which I posted, so that until and unless you give me a feedback on them, I'm not going to give you more notes. Sound good? Yes, ma'am. Okay, ma'am. At least a few who are a representative of the class, you can discuss amongst yourself, and then you just give me a feedback so that I know the format which I used. Is it okay? Is it helpful? I know it's okay, but I want it to be helpful to you, which is easier for you to read and remember as compared to, you can couple it with the book, but when you are revising, it becomes easier. Instead of going through the whole book, you can just read these few pages and complete parasitology in a short crash course sort of a way. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Yes.